In a kingdom where the Sirocco winds whispered secrets through the desert, एक बादशाहत में जहाँ सरको हुआ सहरा में राज सरगोशी करती थी, there lived a young scribe named Nail. वहाँ एक नौजवान कातब रहता था, जिसका नाम नाइल था, whose ink-stained fingers held more truth than all the courtiers in the palace of Kalharet. जिसकी स्याही से रंगी इंगलियां महल के तमाम दरबारियों से ज्यादा सच जानती थीं. Kalharet was ruled by a mighty sultan. कालहारत पर एक ताकतवर सुल्तान हुकूमत करता था, cruel in his proclamations and suspicious of anyone who knew too much. जो अपने अहकामात में जालिम था और हर इस शख्स पर शक करता था जो बहुत कुछ जानता हो. His chief vizier, Harun al-Muradi, was once a mystic. इसका बड़ा वजीर हारून अल-मुरादी कभी एक सूफी हुआ करता था, said to have danced with jinn and bargained with the stars. कहा जाता था कि वो जन्नात के साथ रक़स करता और सितारों से सूदे करता था. But power had twisted his heart to obsidian. लेकिन ताकत ने इसका दिल स्याह पत्थर जैसा कर दिया था. And now he sought to eliminate all ancient knowledge not under his control. और अब वो हर कदीम इल्म को ख़त्म करना चाहता था जो इसके काबू में न हो. One night, Nail found a scroll hidden beneath a loose tile in the palace library. एक रात, नाइल को महल की लाइब्रेरी में एक ढेली ईंट के नीचे एक तुमार मिला, its text glowing faintly with vermilion letters, जिसका मितन हल्की रोशनी में सरख हरफों से चमक रहा था. It spoke of the citadel of smoke. ये धुएं के किले के बारे में था, a forgotten fortress that appeared only during the last hour before dawn. एक भूला हुआ किला जो सिर्फ तुलुए फजर से पहले के आखिरी घंटे में जाहिर होता था, amidst the sandstorms of the great Zahiran desert. अजीम ज़हीरान के रेगिस्तानी तूफानों के बीच. Despite the danger, Nail could not resist. खतरे के बावजूद नाइल रख ना सका. With nothing but a satchel, a brass compass, and his father's old talisman, सिर्फ एक थैला, एक पीतल का कुतनमा और अपने बाप का पुराना तावीज़ लेकर, he fled the city under a moonless sky. वो बगैर चांद की रात में शहर से निकल गया. Days turned to nights, and his skin blistered under the unrelenting sun. दिन रात में बदल गए और इसकी जल्द बेरहम सूरज में छिलनी हो गई. But just as he collapsed from exhaustion, the storm came. लेकिन जैसे ही वो थकन से गिरने लगा, तूफान आ गया. From within the swirling sands emerged the citadel. घूमती रेत से कला नमूदार हुआ. Tall spires made of obsidian glass, ऊंचे मीनार जो स्याह शीशे से बने थे, banners of smoke that danced like living things, धुएं के झंडे जो जिंदा चीजों की तरह नाचते थे. He entered and the air turned cold. वो अंदर गया और हवा सर्द हो गई. Inside, the walls whispered. अंदर दीवारें सरगोशी करती थीं. The spirits of scholars long dead floated beside him. मदतों से मरे हुए उलमा की रूहें इसके साथ तैर रही थीं, guiding him to the heart of memory, जो इसे याददाश्त के मरकज की तरफ ले जा रही थीं. A great orb that shimmered with every forgotten tale of the world. एक अजीम गोला जो दुनिया की हर भूली कहानी से जगमगा रहा था. But he was not alone. लेकिन वो अकेला न था. Vizier Harun had followed. वजीर हारून इसके पीछे आ गया था, mounted on a beast stitched together from shadow and bone. एक ऐसे अफरियत पर सवार जो साए और हड्डियों से बना था. He wanted the heart for himself, to twist reality to his whim. वो मरकज़ याददाश्त को अपने लिए चाहता था, ताकि हकीकत को अपनी मर्जी से बदल सके. A confrontation ensued, not of swords, but of stories. एक मुकाबला हुआ, तलवारों का नहीं, बल्कि कहानियों का. Nail spoke aloud the tales of kindness, betrayal, love, and war. नाइल ने बुलंद आवाज में मेहरबानी, धोखा, मोहब्बत और जंग की कहानियां सुनाई. The entire lineage of humankind preserved in memory. इंसानी नस्ल की मुकम्मल दास्तान जो याददाश्त में महफूज थी. The orb responded. It chose Nail. वो गोला बोला. इसने नाइल को चन लिया. With a cry like the shattering of ancient glass, एक चीख के साथ जो कदीम शीशे के टूटने जैसी थी, हारून was consumed by the very smoke he had tried to command. हारून इसी धुएं में खो गया जिस पर वो काबू पाने की कोशिश कर रहा था. The citadel,
freed of his malice, offered Nail a choice. कला, जो अब इसकी बदनीति से आज़ाद था, नाइल को एक इंतखाब की पेशकश करता है, to stay and become the next keeper of memory, कि वो रखे और याददाश्त का अगला निगहबान बने, or return with the knowledge to enlighten his people, या इल्म के साथ वापस जाए ताकि अपने लोगों को रोशन कर सके. He chose the latter. इसने दूसरा रास्ता चुना. When he returned to Kalharet, जब वो कालहारत वापस आया, the Sultan found himself surrounded not by rebels, तो सुल्तान ने खुद को बागियों में नहीं, but by readers, dreamers, and poets who whispered truth louder than decrees. बल्कि क़ारिईन, ख्वाब देखने वालों और शायरों में पाया जो सच्चाई को फरमानों से बुलंद बोलते थे. Nail became the new vizier, one not of domination, but of wisdom. नाइल नया वजीर बना, ऐसा नहीं जो ताकत से बल्कि हुकमत से हुकूमत करता था. He taught that stories were stronger than steel. उसने सिखाया कि कहानियाँ फौलाद से ज़्यादा मजबूत होती हैं, and memory more enduring than stone, और याददाश्त पत्थर से ज़्यादा देर पा. And sometimes, when the Sirocco winds blow just right, और कभी-कभी जब सर को हवाएं सही चलती हैं, you can see the outline of a citadel dancing in the smoke. तो आप धुएं में रक्स करता एक कला देख सकते हैं. Waiting for the next seeker brave enough to listen. जो अगले बहादुर तलाश करने वाले का इंतजार कर रहा हो, जो सुनने का हौसला रखता हो. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो अब कहानी दोबारा सुनें. इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In a kingdom where the Sirocco winds whispered secrets through the desert, there lived a young scribe named Nail, whose ink-stained fingers held more truth than all the courtiers in the palace of Kalharet. Kalharet was ruled by a mighty sultan, cruel in his proclamations and suspicious of anyone who knew too much. His chief vizier, Harun al-Maradi, was once a mystic, said to have danced with jinn and bargained with the stars. But power had twisted his heart to obsidian, and now he sought to eliminate all ancient knowledge not under his control. One night, Nail found a scroll hidden beneath a loose tile in the palace library, its text glowing faintly with vermilion letters. It spoke of the Citadel of Smoke, a forgotten fortress that appeared only during the last hour before dawn, amidst the sandstorms of the great Zahiran Desert. Despite the danger, Nail could not resist. With nothing but a satchel, a brass compass, and his father's old talisman, he fled the city under a moonless sky. Days turned to nights, and his skin blistered under the unrelenting sun. But just as he collapsed from exhaustion, the storm came. From within the swirling sands emerged the citadel, tall spires made of obsidian glass, banners of smoke that danced like living things. He entered, and the air turned cold. Inside, the walls whispered. The spirits of scholars long dead floated beside him, guiding him to the heart of memory, a great orb that shimmered with every forgotten tale of the world. But he was not alone. Vizier Harun had followed, mounted on a beast stitched together from shadow and bone. He wanted the heart for himself, to twist reality to his whim. A confrontation ensued, not of swords, but of stories. Nail spoke aloud the tales of kindness, betrayal, love, and war, the entire lineage of humankind preserved in memory. The orb responded. It chose Nail. With a cry like the shattering of ancient glass, Harun was consumed by the very smoke he had tried to command. The citadel, freed of his malice, offered Nail a choice: to stay and become the next keeper of memory, or return with the knowledge to enlighten his people. He chose the latter. When he returned to Kalharet, the Sultan found himself surrounded not by rebels, but by readers, dreamers, and poets who whispered truth louder than decrees. Nail became the new vizier, one not of domination, but of wisdom. He taught that stories were stronger than steel, and memory more enduring than stone. And sometimes, when the Sirocco winds blow just right, you can see the outline of a citadel dancing in the smoke, waiting for the next seeker brave enough to listen. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब तक हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।